Hey Ravi, how are you? Good, yeah. It's been an interesting weekend, but we're expecting a very big storm here. 8 inches Oh, of snow in New York, so it's going to be interesting. oh, stay safe, man. Yeah, man. It's funny because yesterday the temperature was about 16 degrees Celsius. It's going to go down to minus 10 in just 48 hours. Oh, that's. I mean, that's risky as well, right? Sudden change of temperature, Yeah, body takes time to adapt. that's true. Anyways, so I was like, today the volatility was somewhat different, although these situations happen in the market. But I thought, key, let's have a small talk around what could be the possible reasons of this volatility. Prince, we lost you. Can people hear Prince? Can you hear me? Dara, can you hear me? Can you give a thumbs up if you can hear me? Okay, it says the host is having some connection issues. Okay, everybody, I think it's going to be an interesting discussion today. I think what Prince was saying was we are going to look at the volatile nature of the market and see what's happening in India. But of course, we'll bring in the perspective from your US data, and I will probably talk about that. We're just sorting the issue out. I think Prince has some connection issue. In the meantime, if you can please retweet the space, quote tweet the space, and share with people who can benefit from this conversation, will be great. Will be very grateful. Data, we'll just bring you in. I'm just having some issues. I think you're coming in now. It shows you're connecting. So Yeah, what Yeah, you're you're in now. speaking about? yeah, there was some glitch, momentary glitch, but I guess it appears to be fine. Now So it Ravi, is. yeah, few points, I mean, which I think could be a possible reason of this volatility. So basically, the results season is around the corner, and most of the companies, as the street was expecting, so the results which have been delivered by majority of the companies are not in sync with the estimates of the street. And obviously the PSC space has done very good in last 1 or 2 years, so there could be a possibility. We cannot rule out that some smart investors are booking profit in those pockets. And even if we come to any sector specific, so basically the chemical companies, the majority of them are citing that they were expecting recovery in Q3, but seeing the commentary or con calls, it appears that it will take few more quarters so that the things settle down is in that sector. And even the FPI SEBI rule change, which I'm not totally aware of the entry cases, but there is some rule wherein the money which is coming from outside, the quantum of money which can be invested in one company out of the total sum that FPI is investing cannot be more than 50%. And on the top of that, there is a upper threshold wherein the source of money has to be like there are more disclosures which has to be given. So these are two hindrances, and apart from that you never know. And even the CPI data, which was the street was expecting it to be 5 and it came out to be 5.0, 5.1. And the India industrial production, which is way above the street expectation. So street was expecting 2.5, and it is 3.8 against 2.4 last time. So a mixed bag we can say, but again I would request other speakers if they have anything on their part.
Neeta and Ravi. To Ravindra Bhandari. So if they are free, they can also join in and we can set the conversation going. So Ravi, I start with you and then we go to Vajpayee ji, data chart and Vineet in that order, or maybe any one of you can shuffle if one person is busy. So what do you think, Ravi? What has happened? Or I think the overall it's I also want to say that it's a pretty interesting year, like, because you cannot rule out the overall geopolitics and national politics, and I think that has a very strong implication on what's going to happen. We are seeing complete volatile market. Probably data you can talk about the U.S. market, but I fully agree with you. I think PSUs are doing very well, and I think in our last space about 2 weeks ago when we had the Gopalji, and he talked about this interesting kind of resurfacing of some of these PSUs. And there was a very interesting question somebody asked that, why don't we do more there or, buy them out? And he said, we're seeing a very interesting trend where these guys are definitely performing pretty well. So I think we have some very interesting speakers. We have Vineet, we have Lakshita also here. Maybe we can, Brajesh is also join here. So let's hear from them. And then we can bring in our perspective. Let's hear these amazing speakers. so data chart, you can go next if you have any thoughts around the topic, and then we go to Vajpayee ji, Vineet, and then Yeah, proceed yeah, to yeah. data. I actually covered Indian markets too. So you had a majority of companies, actually, the bigger companies, I should say, report already. There's still some left to report. This is even in U.S. markets. So earnings season does usually cause volatility, especially with the weighting. If you do take a look, your PSU companies, you have them. Obviously, your large caps have underperformed, mid caps and small caps, right, over the past 12 months, and actually even going all the way back since 2022. So, due to that, there's bifurcation that's gone on in prospective markets, whether, especially if we're talking about Indian markets in general. So, small caps and mid caps have definitely continued to outperform. You are seeing growth now. That is a growth cycle. The business environment when it comes to this, we discussed this just the other day. This is the market and sector valuations when it comes to India, right? So real estate, we had talked about that in a previous space, and you can see that the growth is still, real estate, staples as well, telecom, and this is what their forecasted growth is. And then you also have healthcare. Now, energy, right? Obviously, India is also trying to become more diversified in its energy outlook. So you've had some of those companies actually perform. So there is going to be a little bit of volatility, but here's the performance as well of this when it comes to this is the dashboard, and this goes all the way January end, so you can see that performance in that split. Even if you take a look at the BSE 500, you can definitely see. Up and to the right is a chart you want to look at, right, on a price perspective. That is in rupees, that's not in dollars or anything like that. But there is a little bit of consolidation. So, yeah, you want to definitely also notice the fact of volatility affecting the real stocks. Real stocks as a segment were one of also the clear leaders. You had aerospace and defense stocks as well, like Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Electronics, Cochin Shipyards, right? They have that side for aerospace and defense. They also have the other commercial sides. So you are going to more than likely continue to see further partnerships signed by respective U.S. based companies as well as European companies, right? So growth wise, India is still looking good. Valuations are just as elevated, if you want to call it, overall compared to U.S. markets, right? So there's a lot to look at if you want to focus on certain areas. Metals. I think we lost him, Ravi. Yeah, Vineet, we cannot hear for some reason. so data chart, if you are able to hear me, please check your connection. We are unable to hear you. So meanwhile, we move on to our next speaker. So वाजपेयी जी आप बताएं क्या लग रहा है क्या कारण है मार्केट गिरने का और quickly if you can like data chart you're back or you completed your part. No issues. वाजपेयी जी आप बताएं और फिर उसके बाद विनीत पे. Okay.
तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्रिंस जी, मैं ऑडिबल हूँ? जी सर, हेलो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, बाकी ऑडिबल है। तो थोड़ा सा फिर मुझे अभी 10 मिनट का टाइम दीजिए जरा। जी जी जी। मैं विनीत, जैसा पीसफुल पे बात करता हूँ। विनीत, आपको क्या लग रहा है, या व्हाट यू फील लाइक, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ द volatility, and what's your sense on broadly the results which have been I mean declared so far? Hi, all. So I think two, three reasons there. There are, look, one, our markets are not cheap anymore, right? We're at, close to 22,000. We've been doing very well for a while. I think one of the short-term reasons that there's been a little bit of volatility the last few days, I think, and this is my view, is that the growth in capex numbers that the government put out in the interim budget, even though it's an interim budget and people shouldn't be taking it so seriously, but I think the fact that the level of growth that they spoke about uh, in capex is slightly lower than what I think the street expected, and this in the background of the fact that many stocks in sectors like railway, defense, uh, even construction, many of these sectors that depend largely on the government laying out a significant amount of money. Uh, and when the government has said that at this time in this interim budget that the allocation to capex will be slightly slower, plus the fact that they've spoken about bringing fiscal deficit to 5.1% and a glide path to 4%. So I think the market then believes that if these fiscal deficit numbers have to be achieved, growth in capex spending cannot be as high as it probably was in 22 and 23. And that could be the reason why some of those sectors have seen a correction. And then because a lot of people have been invested in those sectors, so when you start seeing drawdowns in some of your large positions, you tend to get spooked, and it spreads to other parts of the market as well. That's my sense, at least what the one of the fundamental or primary reasons for the last few days of volatility is this. Alongside the fact that a lot of foreign institutions have been, at least the smaller ones, have been lightening their positions in the banking sector as well. And I think this all started from HDFC Bank results, in a sense, where it became abundantly clear that deposits growth is going to be a problem. And if HDFC Bank is facing that problem, and they are going to then eat into the share of deposits of other banks, and so the entire sector is under stress so long as liquidity remains tight. And the RBI has made it pretty clear as well that they have no intentions of reducing rates anytime soon. In fact, it seems like even if there are rate cuts in the US in the next 6 months, it's possible that the RBI might still hold on to tighter liquidity for slightly longer, because they've made their intentions very clear of focusing solely on bringing inflation down to the sub 4% range as well. So when you have a market where foreigners are selling some of the large positions, and at the same time, when there is a narrative around reduction in capital expenditure potentially by the government, and this could completely change once the budget comes in, and once the elections are done. But I think these are some of the short-term factors. I don't think it's anything to be worried about personally. If you ask me how I'm positioning it, I am a buyer on any major dips. Obviously, one must look at the technical setup, and if in certain spaces, at least yesterday when I was seeing, in many cases the chart started uh, you know getting to the bottom level of consolidation, and in a couple of cases even breaking down, which is slightly concerning. And I'd probably be in a wait and watch mode for a while, but if there's any major fall, I'm definitely a buyer in these markets. Great, Vineet, and I think this is the best way not to, obviously, do not be running after all the companies, rather than taking your time and sitting, observing what's happening and doing your due diligence so as to come to a
point wherein you can add to the existing position rather than going for fresh investment. And if something which was a part of your watch list and you had been waiting for a correction to add that, then definitely these dips are a buy. So next in line is ब्रजेश जी. So ब्रजेश जी, क्या लग रहा है वॉलेटिलिटी का रीजन, और आप अपने आप को कैसे इस टाइम पे प्लेस कर रहे हैं? Hi, good evening to all. Am I audible? Good evening sir, go on. ओके, तो देखिए अब लास्ट एक साल से मार्केट कंटिन्यूस वन वे बढ़ता जा रहा है और ये एक लीनियर मूव मूव मार्केट में कभी भी नहीं रहेगा। तो मार्केट में करेक्शंस आते रहेंगे और यूजुअली जब भी अर्निंग सीजन होता है तो अर्निंग सीजन जब क्लोज होता है तो उसके बाद में फिर फंड मैनेजर्स एचएनआईज एलोकेशंस देखते हैं, अपनी कंपनीज के रिजल्ट पे जाते हैं, कॉन कॉल सुनते हैं, फिर वो लोग कुछ रिशफलिंग करते हैं इस पोर्टफोलियो में। तो वो हो रहा है और मार्केट में बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू स्टॉक्स कुछ लॉजिक से कुछ यूफोरिया में बढ़े हैं, तो वहां पे सेलिंग है। और मार्केट बहुत यूफोरिक हो जाता है एकदम, बुल मार्केट टॉप आउट तो नहीं कह सकते लेकिन काफी जब बढ़ जाता है तो उस टाइम पे मार्केट अपने वेट से ही घटने लगता है, क्योंकि एक लेवल के बाद में कोई रीजन नहीं होता है, कोई कंपेलिंग बाय नहीं रहता है कि क्यों बाय करेंगे। तो स्टॉक्स जब बढ़ना बंद हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे बेचने आते हैं और बायर नहीं होते हैं, तो डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होती है और मार्केट में सडन फॉल्स आते हैं, वोलेटिलिटी होती है। और उस टाइम पे लोग जो टिप्स पे काम करते हैं और जो लोग एकदम जल्दी जल्दी मार्केट से निकलना चाहते हैं मोमेंटम प्ले में, वो लोग और ज्यादा उस वोलेटिलिटी के शिकार होते हैं। और सेक्टर रोटेशन होता है, जिससे फॉर एग्जांपल भी सबसे ज्यादा ट्विटर पे ट्रेंडिंग है पीएसयू स्टॉक्स, और सब लोग तो एक दो दिन का फॉल पीएसयू स्टॉक्स में जितना बड़ा बुल रन आया है और उसके पहले एक डिकेड का अंडर परफॉर्मेंस था, वो सब चीजों को देखते हुए ठीक है, जो कंपनी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है दे आर बाउंड टू गो डाउन, बट जो कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं दे विल परफॉर्म वेरी वेल। तो वैसा कुछ अनयूजुअल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मोमेंटम और ट्रेडर्स को कुछ भी लगता होगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टर सोचने के लिए आप अपनी कंपनी के ऊपर, अगर आप कंपनी का कॉन कॉल सुनते हैं, मैनेजमेंट को सुनते हैं, और अगर आपको रीजन लगता है तो ये वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कभी भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं होती है, rather इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी अब 15 मार्च आ रही है, एडवांस टैक्स की डेट है, सामने आ रही है। एचएनआईज और जो लोग लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों के पास होल्डिंग्स है, दे बुक्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड दे माइट हैव टू पे वेरी बिग अमाउंट ऑफ टैक्सेस। तो वो सब भी प्रिपरेशन सब शुरू हो जाएगी 15 मार्च तक। तो आपको ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट करो कि इतने वैल्यूएशन के बाद भी स्टॉक्स रोज बढ़े, तो ये संभव नहीं है। बी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ से ऐसा करेक्शन आता है तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको करेक्शन आता है तो आपको समझ में आता है कि हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है एंड हाउ इट परफॉर्म इन द करेक्शन। अगर आपका स्टॉक परफॉर्म करेक्शन में भी बहुत ज्यादा नहीं घटता है मार्केट के हिसाब से तो अच्छा है। और वहां पे भी आज भी काफी कंपनीज ने नए हाई बनाए, काफी कंपनीज बढ़ी भी थी। तो मेरे हिसाब से तो नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत लेट आए मार्केट में, जिन लोगों को आदत पड़ गई है रोज बाजार बढ़ेगा, और उन लोगों के लिए जरूर एक शॉकिंग डे है कि रोज जो वो देख रहे थे पिछले एक साल से बाजार रोज बढ़ रहा है। बाकी इससे अगर कोई सीजन और मेच्योर्ड प्लेयर है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा कोई खराब नहीं है। जब तक यूएस का S&P 500 अब 5,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यूएस में जो मार्केट का हीरो एनवीडिया है, जो फ्रंट रनर स्टॉक है, वो डेली नए हाई क्रिएट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर जा रहा है, आपका मेटा में जिस तरीके का बुल रन आया है, तो एकदम से ये सोचना कि बाजार में कुछ रातों रात खराब हो जाएगा, वो भी मुझको नहीं समझ में आता है। मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर वेट करना चाहिए। अगर आप 10-20% कैश लेके बैठे हो तो मार्च में एक अच्छी अपॉर्चुनिस्ट टाइम आता है। अगर आपका स्टॉक कोई बिना रीजन के घटता है, सिंपली कि सब स्टॉक घट रहे हैं और लोग उसको बेचते हैं, तो वो वेट करने का टाइम होता है। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए थोड़ा कैश होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बुल मार्केट से बियर मार्केट में जा रहे हैं। वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी सेक्युलर बुल मार्केट। सेक्टर
सेक्टर रोटेशन है, लार्ज कैप स्टॉक्स उतने नहीं बढ़े हैं, उससे Well काफी said. स्टॉक्स बेच के And हल्की हैं क्या? right, sir. And even I was checking a 10-year, I mean 20-year valuation chart of the PSUs. So basically उसमें भी मतलब मैं नहीं कर रहा था, एक जगह एक एनालिसिस किया था, तो उनके एनालिसिस में the current level of valuation is approximately the same level it was in 2014. So it's very I mean from technical point of view, it's very crucial whether it will break on the above or that will act as a resistance and we'll see some consolidation or maybe some correction from there. And definitely, as Brajesh ji was pointing out, that if your horizon is short, so definitely you have to see results of current quarters, basically those who are playing some swing trades or kind of thing. But if your horizon is long, then one quarter result may not be a right criteria, and it is a fair possibility that if a very good company has a bad quarter, then definitely it's an opportunity to add. The broader point is you should not be doing thing in hurry, rather than take your time out and analyze things and make an informed decision. Simply going by social media or TV tips, you have seen that recent event wherein the front running was happening. So for that reason, we primarily avoid stock specific discussion. And even if for illustration purposes we have something, so definitely we give I mean we advise our audience that please consider that these are highly biased views, and if you act on these views, there are high chances you will lose money. So with that caveat, let's move on to next speaker. Meanwhile, I have a small request to make. I have pinned a tweet wherein I have shared the link to my YouTube channel. So it's a humble request to everyone who has joined today. Please retweet that so that it will get the wide reach and the YouTube algorithm can pass on this great content to more viewers. And with that, I now allow Vindyanchal Pandeji. Ji, you can unmute and Sorry, ask your Vinay. question. Sorry, Prince, you're very humble. Can everybody really, because we all benefit so much from what he shares and the people he brings, the least we can do is make sure that, the YouTube channel becomes the number one channel to go to. So, can everybody, first of all, follow the host, follow the speakers, retweet the tweet that Prince just talked about, and can you please share this space link with your friends? Quote tweet Prince's main tweet about the space today and retweet that, so it can really create a buzz. So just want to say that let's make sure that we spread this amazing opportunity for many folks out there. Thanks, Ravi. So Vindyanchal, you have your hand raised. You can unmute and ask your question or हाय maybe put. हाय हेलो एवरीवन। हाय प्रिंस, कैसे हो आप? All good, all good. Please go ahead. अह, बस मेरा मतलब सभी लोग इस पे जवाब दे सकते हैं। मेरा एक साल का जो आज का रिजल्ट आया था, आई थिंक भारत फोर्ज, यस आई रिमेम्बर, भारत फोर्ज का तो क्वार्टरली रिजल्ट आई थिंक वाज क्वाइट गुड। लेकिन उसके बाद भी इसने सर्किट हिट किया 10% का, 15% का। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब अगर आप लोग किसी को चार्ट वार्ट अगर अच्छा है तो उसका बता सकते हैं। So Vindhyachal, or although we avoid stock specific discussion, but जो आपने point raise किया है कि result अच्छा है फिर भी नीचे का circuit क्यों लग गया, तो देखो यार market का texture ऐसा ही है कि what is obvious rarely happens, right? और इसमें ये हो सकता है कि जो strong hands होते हैं वो weak hands को बाहर निकालने के लिए, देखो when the broader market is correcting, it is very obvious that majority of the small mid caps will correct. Likewise, there are exceptions. There are companies with good result which were positive today, and even in few companies were in upward circuit.
बट इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन क्या हो सकता है उसको क्वांटिफाई करना, आई थिंक until unless there is some news or some development in the company which at least I am not aware of, could be a नहीं, possibility. उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला था कि अगले क्वार्टर में इनका थोड़ा बिजनेस डाउन रहेगा बिकॉज ऑफ अब्रॉड उनका जो बिजनेस रहता है, बस इतना ही था। बाकी नंबर्स तो मेरे को लगा सही थे। और Okay. मेरे को इसलिए भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये ज्यादातर भारत फॉर्जी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है और फंडामेंटल इसके सही होते हैं। ओके। ब्रजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और मे बी विनीत, वाजपेयी जी, एनीवन? वाजपेयी जी हैं क्या? वाजपेयी जी हाँ, जब ब्रजेश जी कुछ अच्छे बोलना तो रिजल्ट पहले आने ब्रजेश की बात सुन लो, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं हूँ यहाँ पर विंध्याचल। अच्छे रिजल्ट क्या है, मार्केट जितना बढ़ा हुआ है तो कई चीजें ऑलरेडी मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है, तो हाँ, ब्रजेश जी एंटिसिपेशन में बोलिए आप। स्टॉक्स पहले ही बढ़ जाते हैं। तो जब कई कंपनीज के रिजल्ट आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, वाकई रिजल्ट अच्छे भी होते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा फॉरवर्ड ब्रजेश जी की लुकिंग होता आवाज है। आ रही है ब्रजेश जी? हमको नहीं सुनाई पड़ रही क्या? हेलो। सब हेलो। आ रही है, उनकी आवाज आ रही है, सबको आ अच्छा, रही है, तो शायद उसका आपको नहीं हमको नहीं सुनाई सुनाई पड़ पड़ रही। रही। तो मार्केट क्या है कि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो अच्छे रिजल्ट्स मार्केट पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है। और जब प्रॉफिट बुकिंग का और ऐसा टाइम आता है तो उस टाइम पे फिर स्टॉक्स बढ़ते नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक, अगर आपको रीजन लग रहा है तो आपको स्टॉक के साथ रुकना चाहिए। और कंपनी के कौन कॉल अगर होते हैं और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ग्लोबल क्यूज क्या है, सेक्टर के पीयर्स की क्या सीन है, वो देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में होता है कि रिजल्ट इस क्वार्टर के अच्छे हैं लेकिन आगे सीन बहुत खराब होता है। वो या तो आपको मार्केट में मालूम पड़ेगा या आपको कंपनी का मैनेजमेंट कोई अगर इशारों में बता दे और ब्रजेश जी आपको। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो विंध्याचल, ब्रजेश जी का कहना यही है कि कई बार मार्केट में, जैसा कि मान लो कोई ऐसा है कि एंटिसिपेटेड रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो उसके पहले ही मतलब उस चीज को आप मान के चलें, जो स्मार्ट मनी है या जो मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, और बाय द टाइम रिजल्ट इज आउट दैट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। और जब ब्रॉडर मार्केट करेक्ट हो रहा है और लग रहा है किसी लोगों को कि भाई हम प्रॉफिट में हैं, और उनको आगे की विजिबिलिटी मैनेजमेंट ये बोल रही है नेक्स्ट क्वार्टर में देयर कुड बी सम challenges, तो it is very obvious that some people take out money off the table. So, और दूसरा इसमें I'm not sure क्या liquidity position है, तो there are times when free float is very less in the companies. In those situation also कि उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आती है तो उसको काफी मतलब आपका सर्किट हिट करता है, या परसेंटेज वाइज काफी उसमें करेक्शन रहता है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी यार देखो क्या चल रहा है, वन थिंग इज फॉर श्योर, जो इन्वेस्टर बिहेवियर है नोबडी इज एबल टू प्रेडिक्ट, राइट? इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट अदर investors behavior broadly, you can like rule the market, but that is a rare possibility. Vineet, anything you have to add, or we move on to Vajpayee? No, nothing in particular. I think what you said about positioning is absolutely correct, Prince. I think this is how it typically works, and which is why when you see, this happens a lot, right? That a company reports decent results, and then the stock falls 5-7%, and everybody's wondering why that has happened, because the market has discounted good results in advance. And obviously, if there's any disappointment in the results, then any stocks that have been overstretched and have factored in a lot better results than the numbers that have come in will fall. But in a lot of cases, market tends to shoot, on extremes, right, on the upside as well as the downside. So long as the numbers are good, you shouldn't be worried if you're holding on from a medium to long term point of view. If you're a swing trader, then obviously you must have your stop losses in place and you must look at your charts. But if you are a medium to long term investor, then the one thing that you should focus on is two things you should focus on is making sure that you don't chase euphoria, and if a significant amount of the future growth seems to already be captured in the price, then you're probably best letting it go. Let somebody else make money there. You don't have to attend every party that is thrown. And at the same time,
if something that you're holding on from a decent level has done well for you, and the results and the numbers that the business is reporting today are still good, and in spite of good results and good numbers, if the stock has corrected a little bit, you shouldn't worry about it. uh, that's all. Fair point, fair point, Vineet, and a very pertinent point has been mentioned by Lakshita. So she is also saying estimate also play a very bigger role in price movement. So very well taken, and we have always seen that if the street estimates are not met, or maybe if the result is good but the street was expecting much better, in those cases also we can see abnormal behavior or correction in the stocks. So वाजपेयी जी, आप टेक्निकल लेवल पे देखते हैं तो इंडेक्सेस, और आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और मे बी द बिगर इंडेक्सेस, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं जहां पे वी नीड टू बी कॉशियस? हाँ, तो धन्यवाद प्रिंस जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं विंध्याचल जी ने जो भारत फोर्ज बताया, मैं थोड़ा सा उसी पर 2-4 मिनट अपनी बात रखूंगा। भारत फोर्ज ने पिछले 2 क्वार्टरली रिजल्ट में उसने कंटिन्यूअस अप मूव दिया था, उसके रिजल्ट भी बेहतर आ रहे थे, इस बार भी बेहतर ही रहे। बट वो जो उनकी गाइडेंस है, जो आपने भी सुना हल्का सा, अभी मैं पूरा कॉन कॉल नहीं सुन पाया हूँ, तो जब उसको मैं सुन लूंगा तब फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। बट उन्होंने अगर हल्का सा भी कह दिया कि अगले क्वार्टर में थोड़ा दबाव रहेगा, तो उसको ही मार्केट ने काफी सीरियसली ले लिया। और जैसे आप कहें ना 10% या 15% जो गिरा हो, तो होता क्या है कि जब पोजीशन अगर लॉन्ग की बहुत बन गई, चूंकि ये पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा प्ले कर रहा था, और ये भी रिसेंटली इसने इसका जो मतलब डिक्लेरेशन हुआ कि ये कंपनी भी आपकी डिफेंस में अच्छा काम कर रही है, और डिफेंस का इसका कोलैबोरेशन भी हुआ कुछ फॉरेन की कंपनियों से। तो उसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी थी लोगों की, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बन गई होंगी। जैसे आज भी उसने ऑल टाइम का हाई ही बनाया, कल बनाया था, आज उसने छोटा सा और ऊपर का हाई बनाया। तो जैसे ही गाइडेंस में कहा गया कि अगले क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको जो है इन्होंने रिएक्ट कर दिया। और चूंकि पोजीशन ज्यादा बनी होगी लॉन्ग की, इस एक्सपेक्टेशन में कि ये डिफेंस से भी संबंधित स्टॉक है, और इसमें अगले क्वार्टर, चूंकि देखिए जनरली क्या होता है, डिफेंस के फाइनल ऑर्डर जो भी वो लास्ट क्वार्टर में सारे फुलफिल ही कर दिए जाते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि लास्ट क्वार्टर हमेशा और बेहतर होगा पिछले से। बट अगर मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दे दी कि अगले क्वार्टर में दबाव रह सकता है, तो फिर उसका जो है थोड़ा सा विपरीत असर पड़ने की संभावना रहती है, और वही इसमें हुआ है। लगा विंध्याचल तो चले गए, तो हाँ है शायद नीचे नीचे हैं। तो भारत फोर्ज में जब ये 780 790 के आसपास था इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, तो वहां से मैं कंटिन्यूअस कई बार इसका डिस्कशन मैंने किया था, स्पेसेस में भी और टेलीग्राम पर भी। और उसके बाद इसने रिजल्ट भी ठीक ठीक दिया, इस बार भी ठीक ही दिया, और अच्छा खासा वहां से राइज भी हुआ है। तो जो रिजल्ट सीजन होता है प्रिंस जी, अब मैं थोड़ा सा अपने जो डिटेल वाली बात की है इंडेक्स की, इंडाइसेस की, तो उस पर मैं आऊंगा। देखिए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अक्टूबर का महीना याद करें। अक्टूबर में जब हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ था, तो हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा, और अक्टूबर का जो लास्ट वीक था, वहां पर जो फॉल हुआ था, वहां पर भी एक चिंता की बात बन रही थी। तो उस समय लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से 31 अक्टूबर से लेकर के वो 3-4 दिन तक हम लोगों ने उसमें मनीष मल्होत्रा का स्पेस चलता था रात में, तो मैं उसमें कई बार अपनी बात को मैंने रखा, और वहां पर भी मैंने ये बात रखी थी कि रिजल्ट सीजन में एक वोलेटिलिटी बनती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास रीजन भी होता है। अब जैसे आज ही इसका रीजन बन गया कि भारत फौज के रिजल्ट तो अच्छे आए, बट उसने गाइडेंस जो है थोड़ी सी कमजोर दे दी, तो उसी के बहाने वो गिर गया। अब गिरने के बाद क्या होगा कि भाई जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ऑप्शन के माध्यम से बनाई, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, उनका तो पैसा जीरो ही होना है। फ्यूचर में जो है उनको भी प्रॉब्लम होगी। जिनके पास कैश में पोजीशन चल रही है उनके लिए कोई समस्या नहीं, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। नहीं किया होगा तो आगे चल के तो मतलब वो चलेगा ही, बट इस क्लियरिंग के लिए या इस एक्सपायरी के लिए वो ट्रबल में रहेगा कम से कम लास्ट एक्सपायरी तक। तो ये महीने की, जब इस साल की मैंने स्टार्टिंग की, तो हम लोग बिल्कुल हाई के पास थे। 1 जनवरी को भी हमने ऑल टाइम का हाई बनाया। अब हम 2 महीने से मार्केट बढ़ रही थी, दिसंबर पूरा बढ़ी, नवंबर पूरा बढ़ी, तो उसको पास बढ़ने, मतलब बढ़ने के जो रीजन थे वो 3 इवेंट्स मैं मानता हूँ जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव होते चले गए, और उसके बाद मार्केट ने उसको पॉजिटिव करते करते काफी तेजी से बढ़ गई। अब घटने का रीजन कोई था नहीं ना, तो घटने का रीजन ढूंढने के लिए मार्केट को रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आने के बाद से एक मिक्स टाइप का ट्रेंड शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलीकैब को देखा, उसकी आईटी की रेट हुई,
तो आईटी रेट के बाद वो 30% के लगभग गिर गया। तो पिछले महीने रिजल्ट और प्लस इवेंट्स, जो भी इवेंट किसी स्टॉक में हुई, उसमें हमने एक जबरदस्त फाल देखा। तो कारण ये कि हम जो मानते हैं कि जब एक रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट पहुंच जाती है, कोई भी स्टॉक भी पहुंच जाता है, तो वहां से करेक्ट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो करेक्शन किस रीजन से होगा, वो रीजन कोई ना कोई मार्केट ढूंढती है। अब जैसे भारत फोर्स के साथ भी अब एक रीजन बन गया, अगर ये रिजल्ट के साथ वो गाइडेंस नहीं आती उस प्रकार की, तो शायद वो इतना रिजेक्ट इतनी बुरी तरह से नहीं गिरता। हो सकता है 2% गिरता, या शायद साइड वे रहता, या 1-2% ऊपर भी रहता। बट चूंकि उन्होंने गाइडेंस खराब दे दी, जबकि गाइडेंस लोग अच्छी ही देते हैं। अब मैनेजमेंट की ये तो भाई अच्छा ही कही जाएगी, उन्होंने आगे के लिए आगाह कर दिया, बट उसको मार्केट ने बहुत जबरदस्त रिएक्ट कर दिया। तो ये तो उस स्टॉक की बात हो गई। इंडेक्स के बाद संबंध में देखिए, लास्ट मंथ में हमने, जब लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था, उस समय ही मैंने एनालाइज किया था कि करीब एफएनडो के लगभग 50 स्टॉक ऐसे थे जो कि 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में 20% से अधिक, सॉरी 10% से अधिक फॉल हो चुके थे। मतलब मार्केट हमारी नहीं गिर रही थी, लेकिन स्टॉक्स में 10% का, 15% का, 30% तो चलो एक्सेप्शनल थे, जैसे पॉलीकैब था या फिर जी बिजनेस था, और सारी जी लिमिटेड। बट और स्टॉक्स में भी हमने देखा 20% का फॉल एचडीएफसी बैंक में सबसे पहला वहीं से शुरू हुआ। तो वो सब चीजें जो हुई हैं, उनकी वजह से वो मार्केट में हल्की हल्की वीकनेस तो थी। अब जैसे आप मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो मैं जैसे पिवोट लेवल से देखता हूं, तो मंथली का रेजिस्टेंस 1 उसने इस मंथ में भी टच किया। अब मंथली रेजिस्टेंस 1 के बाद करेक्शन एक स्वाभाविक प्रक्रिया, चूंकि इतने हाई पर है, तो जहां थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। बट मुझे लगता है ये सब नेचुरल करेक्शन है, इनमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी हमारे एक साथी विनीत जी ने शायद काफी डिटेल में बजट के बारे में और सबके बारे में बताया। तो बैंकिंग की जो बात चल रही है कि बैंक में डिपॉजिट की शॉर्टेज है, मैं वहां पर थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि हो सकता है कि किसी को इसको थोड़ा सा इस पर सहमत ना हो। बैंक के स्टाफ बैंक के स्टाफ की भी एक, मतलब उनको भी एक काम दिया जाता है कि आप अपने कस्टमर से उसको म्यूचुअल फंड में पैसा लगवाइए। मैं स्वयं अपना बता रहा हूँ कि मैं जब कभी जाता हूँ किसी भी बैंक में और एफडी की बात करता हूँ, तो एफडी की जगह पर हमको दूसरा सजेशन दिलाने लगते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें एफडी से अधिक पैसा मिलेगा। तो आप ये बताइए कि जिनकी जिम्मेदारी है डिपॉजिट बढ़ाने की, और अगर वो मोटिवेट करेंगे कस्टमर्स को दूसरी तरफ, तो फिर, और वैसे भी मार्केट में हाई चल रही है, मार्केट हाई लेवल पे, तो सामान्य रूप से आदमी का झुकाव उधर है, प्लस बैंकर्स भी उसको जो है मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे मोटिवेशन के बाद में तो पैसा बैंक से ही निकल के तो वहां जाएगा, तो डिपॉजिट तो स्वाभाविक रूप से कम होंगे। अब उसकी जो भी प्रॉब्लम्स बैंकों को झेलनी पड़ेंगी, वो जब जब वहां समस्या शुरू होगी, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट करेंगे, या वहां से तुड़वा के इधर पैसा लगवाएंगे। इसको मतलब कोई जो भी हमारे रवि जी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि चाहे वो अगर इस पर कुछ अपनी टिप्पणी होगी तो देंगे, क्योंकि उनका काफी अच्छा अनुभव है। बट ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं कम से कम 3 अलग अलग बैंकों की बात बता रहा हूँ, तीनों बैंकों में मुझको कहा गया, नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है, कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। बट है इस प्रकार की बात कि आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो ये एक समस्या ये बैंक के साथ में है कि बैंक स्वयं अपना डिपॉजिट जो है डाइवर्ट करवा रहे हैं, चाहे उसके पीछे रीजन ये हो कि उनका फाइनेंस नहीं हो पा रहा हो, या उनको अधिक लग रहा हो कि हमको अधिक पैसा देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, हमारे पास लोन लेने वाला कोई नहीं है। जो भी रीजन हो, ये तो वो इंटरनली समझते होंगे। अन्यथा पहले तो बैंक के कर्मचारी कोशिश करते थे कि भाई अधिक से अधिक एफडी कहीं से करवाएं, हम लोगों को बुला बुला के करवाएं। तो वो बैंक वाली समस्या अपनी जगह पे है। बैंकों में जो एचडीएफसी बैंक की गिरावट हुई, उसके बाद से बैंक निफ्टी पिछले पूरे महीने में लगातार कमजोर ही रहा, और इस महीने की स्टार्टिंग से भी वो कमजोर ही है। जैसा कि मैं टेक्निकल पॉइंट पर जिस लेवल को मैं देखता हूँ पिवट लेवल से, तो उसमें आप मंथली पिवट से नीचे ही वो पिछले महीने भी रहा। इस महीने वो मंथली पिवट को एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाया। निफ्टी की जहां तक बात है, वो 31 को जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी, और मैंने इस बात का डिस्कशन कई जगह किया अपने स्पेसेस में भी और अन्य स्पेसेस में भी, कि अगर हमने एक बार निफ्टी को 2-3 महीना हो गया जब से उसने पिवट को ब्रेक नहीं किया, मंथली एवरेज को, तो एक बार तो ब्रेक होगा, और वो आज हमारा ब्रेक भी हुआ। तो इतना 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 मतलब करेक्शन तो स्वाभाविक है, और अभी थोड़ा सा और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब एक बार एक एवरेज ब्रेक होता है, तो मंथली का जो सपोर्ट बने वहां तक मार्केट जाने की संभावना बनी रहती है। स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी करेक्शन हो चुके हैं जो एफएंड हो गए हैं, मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ,
और जहां तक पीएसयू स्टॉक की बात, तो पीएसयू स्टॉक ने पिछले 1 साल में जिस प्रकार का ग्रोथ दिया, पिछले 1 साल से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपका ये आरईसी 105 104 रुपए के आसपास था और 500 के ऊपर उसका भाव गया। अगर 5 टाइम स्टॉक हुआ है तो ऐसा नहीं वो एक बार में हुआ, जब पहले हर लेवल पर उसने थोड़ा करेक्शन किया। अगर वो 175 गया तो वहां से भी करेक्ट हुआ, 250 पे गया तो वहां से भी करेक्ट हुआ। तो हर लेवल पर करेक्ट हो करके उसने आगे बढ़ा है, और 500 के ऊपर गया तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अगर हमने उसको 100 पे नहीं लिया, 150 पे नहीं लिया और 300 पे भी नहीं लिया, तो 500 पे हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा तो मतलब एक तरह से हमारी ग्रीड की पराकाष्ठा है। तो वहां पर हम लेंगे तो कहीं ना कहीं जब भी बिल्कुल टॉप पे लेंगे, इस बात को मैंने कई बार कहा कि टॉप पर लेने में 2 चीजें होती हैं, या तो वो ऊपर ही चला जाएगा, नहीं गिरेगा तो 10 से 15% के लिए आप तैयार रहिए। प्रिंस जी, आपको याद होगा आपने अभी एक कुछ दिन पहले एक स्टॉक का डिस्कशन किया था, जनवरी का फर्स्ट वीक था शुगर स्टॉक पर, जब हम लोगों ने एक स्पेस भी किया था आपने, जब 6 दिसंबर को शुगर की खबर आई थी, तो उस दिन हम लोगों ने जो डिसीजन किया था, मैंने यही कहा था कि ये जो खबर आई है, इस खबर के आधार पर जितना गिरावट हुई है, इस गिरावट में हमें एकदम से नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये आई ये खबर अभी एक नोटिफिकेशन हुआ, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने अगर शुगर कंपनीज को कैपेस करवाया है और उनकी कैपेसिटी बढ़वाई है, तो उनको एकदम से लच में छोड़ देगी। और आप देखिए धीरे धीरे वो सब खबरें चेंज मतलब हुई भी, नोटिफिकेशन भी चेंज अमेंड हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर एथेनॉल पर उन्होंने सब मतलब एक तरह से इंसेंटिव भी दिलाया वहां से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। तो अल्टीमेटली वो स्टॉक फिर कुछ स्टॉक तो काफी अच्छा रिकवर कर गए, कुछ स्टॉक अभी वहीं पे पड़े हुए हैं। तो जिस स्टॉक की हमारी आपका डिस्कशन हुआ था, उसने देखिए नया हाई बनाया अभी कल, आज भी बनाया। नया हाई मीन्स नया का मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट अगर 11 साल का देखें तो 2011 के लेवल को उसने टच किया। अब वहां से वो मान लिया अगर 20% करेक्ट हो गया, 15% करेक्ट होगा, तो एक स्वाभाविक है कि वहां पर कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे सेलिंग करने के लिए, जो पुराने फंसे हुए होंगे। बट उसने पिछले भाव को नहीं तोड़ा, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि 22.5 रुपए के ऊपर जाने पर वो तेज होगा, तो 22.5 के लेवल को उसने होल्ड किया। मतलब पिछले फाल में भी वो 26 26.5 से नीचे नहीं गया, और अभी उसने फिर बनाया। तो कुछ लोग ऑल टाइम हाई पर बाई करने की रिकमेंडेशन भी करते हैं, और कुछ ऑल टाइम हाई पर बाई करने के, या 10 साल का ब्रेकआउट 11 साल का ब्रेकआउट होता है तो उसको प्ले करने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर हमेशा रिस्क तो रहेगा। तो टेक्निकली थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होना भी था, वो हो रही है। ऐसी कोई बहुत हमको तो इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है। इतने करेक्शन के लिए तो हमें तैयार रहना ही पड़ेगा मार्केट। जी वाजपेयी जी, बहुत सही पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल यू जस्ट साइटेड। तो दीपक भाई भी हमारे साथ हैं और रविंद्र भंडारी भी। तो पहले दीपक भाई के पास जाएंगे। सो दीपक, क्या लग रहा है, लाइक वोलेटिलिटी के रीजंस एज पर यू, एंड सिंस यू आर seeing the market through the lens of technical charts, तो क्या लग रहा है, मतलब from here it's going to stay, or how you perceive? भाई सबसे बड़ा जो रीजन था वो तो ये था कि तुमने मैसेज नहीं किया आज, इसलिए गिर गई सुबह से कि क्या अच्छा लग रहा है। दूसरा ये था कि सबको दिख रहा था कि गिरने वाली है। यू ओनली हैड सेड इट ऑन फ्राइडे कि यार मार्केट तो ठीक नहीं लग रही है, 1-2 दिन जाने देते हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स ढूंढता है, जब उसको वो नए स्टॉक मिलने बंद हो जाते हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि यार अब नए नहीं मिल रहे तो मतलब पुराने वाले तो गिरेंगे एक बार। और गिरने का रीज़न तो देखो वेरी सिंपल है यार। जब भी यूफोरिया होता है तो पैराबोलिक मूव्स आती है, और पैराबोला जो है वो फिर वो न्यूटन की लॉ फॉलो करता है कि ग्रेविटी अपना एक्शन दिखाती है और पैराबोला टूटता है और नीचे गिरते हैं। तो मैंने आज 50,000 पोस्ट करी होंगी ऑन PSUs, कितने वो ऊपर से नीचे गिरे हैं। सो ऑन एवरेज वही 15 से 20-25% का करेक्शन हर जगह हुआ है जो पैराबोलिक था। एंड बेस्ट पार्ट इज स्टिल दे आर नॉट एट एनी मंथली लोज और समथिंग, वो अभी भी काफ़ी ऊपर है फ्रॉम द रिसेंट लोज। तो अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो जनता हमें सुन रही होगी या फिर जो अभी क्वेश्चन पूछ रही होगी कि PSUs में क्या हो रहा है, वो सब ने टॉप पे बाय किया है। प्रॉब्लम ये है।
और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, हर बुल मार्केट में ऐसे ही होता है कि भाई वो नाम की जितनी ज़्यादा बात होती है, अब हम एक रेट देख रहे हैं 100 रुपये का, कोई एनवीसीसी है वो 120 तक देखा, 130 तक देखा, 140 तक देखा, 170 पे ले ही दिया। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि जिस चीज़ को हम जितना ट्रैक करेंगे और नहीं लेंगे तो उसको कभी ना कभी हम लेंगे ज़रूर, और जब लेंगे तब टॉप बनेगा। तो ऐसे ही होता है, और बॉटम का भी ऐसे ही है कि एक स्टॉक हमें पता है गिर रहा है, हम उसको रोज़ देखते हैं कि ये अभी 150 था, अभी 120 हो गया, 100 अब 100 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 70 आ गया। हम उसको ऑन द वे देखते रहे, अपना एनालिसिस चेक करते रहे कि यार ये रीज़न है होल्ड करने का, ये रीज़न है होल्ड करने का, बट समहाउ कोई एक्सटर्नल ताकत आती है और हम उसको 70 रुपये में बेच के निकल जाते हैं। तो ये सारा मतलब नया कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ ऑल रिपीट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन पास्ट एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर अगेन। तो बस किरदार बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है कि रिटेल लास्ट में बाय करता है और फिर फंस जाता है। Right, Deepak, and I totally agree. I had a word with you on Friday, and even honestly, Friday or today, I didn't do anything for that reason. I didn't reach out. Anyways, so Vineet, quickly, you had your hand raised. What's on your part? Then we go to Ravindra. Yeah, no, very quickly. I think the points that Deepak made are very pertinent. And even Vajpayee ji, जो उन्होंने बोला एकदम ही सही बात है. Just one quick point here. Uh, one of the reasons why, अगर एक particular sector में fall आता है, why that spreads across the market also is, and especially PSUs में, क्योंकि काफी सारे जो बड़े PSUs हैं, many of them are, available on the F&O side as well. तो ऐसा होता है बहुत बार ट्रेडर्स F&O साइड पे लॉन्ग पोजीशंस अगर बना लेते हैं इन वन पर्टिकुलर सेक्टर, एंड अगर उस पूरे सेक्टर में फॉल आता है, देन अक्रॉस द बोर्ड मेनी ऑफ देम स्टार्ट गेटिंग मार्जिन कॉल्स एज वेल. तो जब आपको एक जगह मार्जिन कॉल आता है, आपका ब्रोकर आपको कह रहा है कि आप इसको बेचिए, प्लस आपको जो आपका शॉर्टफॉल ऑफ मार्जिन है वो फुलफिल करना है, तो फिर वो कैश मार्केट में उनकी जो पोजीशंस है वो बेचेंगे. एंड जब कैश मार्केट में वो पोजीशन बेचेंगे, लॉट ऑफ टाइम्स अगर वो स्मॉल कैप्स को बेच रहे हैं जिनकी एनीवे लिक्विडिटी, अवेलेबल फ्लोट कम होता है, then you tend to see this kind of a fall across the board, the kind of day that we had today. So it's largely, I think, driven in the very short term by this correction that we've seen in the PSU space, and this tends to happen all the time. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जो सेक्टर जो बड़ा है जिसमें F&O की काफी पोजीशंस होती है, अगर उसमें फॉल आता है, then that tends to spread across the market. And I think going forward from here, अब ये जो पूरा फेज था where everything was rising unscrupulously, हर चीज की री-रेटिंग हो रही थी यूनिफॉर्म, क्योंकि the India story was the background, and everything was doing well. It's almost like एक एकदम ही फ्लैट पिच थी, and हर प्लेयर आके रन बना रहा था उसमें. कोई भले कोहली भी रन बना रहा था और कुलदीप यादव भी आके रन बना रहा था. But I think going forward now, now that the India story, at least in the domestic market, seems fairly well discovered and everybody is equally bullish. और अब next event जो है वो elections है, but elections have also been factored in to a large extent. So जो positive triggers की तलाश होती है market को, some of those additional incremental positive triggers might be missing for some time. And so probably, and this is my estimate and I could be wrong, but going forward, I think now the almost like the men will be separated from the boys, as they say, कि यहाँ से जो stocks actual performance दिखाएंगे, जिनकी expectation जो build up की गई है actually numbers में reflect होंगी, those will do disproportionately well. जहां पे भी या तो नंबर्स मिस होंगे या फिर गाइडेंस अगर वीक दी जाएगी या फिर किसी सेक्टर में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आएगी, and if the market senses that the numbers going forward for this sector might not be very good, then those sectors could get punished disproportionately as well. So I think that phase of easy money where you can buy anything and ride it, micro caps included, we might be nearing the end of it, and from here the market will be a lot more selective in rewarding the good performers and really punishing the bad performers. So in this market, if you are holding any stocks which have done very well in the last year or so, but have not started delivering good numbers already, and if you don't have a good fundamental understanding कि आपके companies
ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 quarters अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करेंगे. अगर आपकी कंपनी अच्छी नंबर्स डिक्लेयर नहीं करती है, यू शुड expect that there could be a correction in those names. That said, अगर performance companies की अच्छी रहती है and the companies that you own continue to report good numbers, I don't think you should be worried about it. And in those cases, even if there is a temporary fall in this volatility, those will will do well in the medium term, and most people will rush in to buy those names which are reporting uh, good numbers and good narrative. So yeah, that's the small point, that the wheat is being separated from the chaff, in a sense. Thanks, Puneet. Reminds me of a situation wherein जब भंडारे में प्रसाद के लिए चप्पल निकाल के आप घुसे, न प्रसाद मिला, चप्पल खो गई, उसके बाद भगदड़ मच गई और फिर लाठीचार्ज हो गई. तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आजकल कुछ कंपनीज के इन्वेस्टर्स के साथ हो रहा है जो टॉप पे एंटर किए. एनीवेज रविंद्र भंडारी भाई, लॉन्ग टाइम यार, कहाँ बिजी हो? पहले तो ये बताओ यार. कुछ नहीं यार, ऑफिस के काम वाम में रहता था एंड देन शाम को टाइम नहीं मिलता था. मैं एक दो बार आया भी, बट देन आई केम ओनली एज अ लिसनर. आज आज पूरा नहीं, cover कर लिया. वाजपेयी जी, गुड आफ्टरनून. तो रविंद्र भंडारी बोलो क्या चालू, क्या बताऊं, क्या बात करनी है बताओ. पर यार देखो, स्टॉक स्पेसिफिक के अलावा कुछ भी चलेगा. एनीथिंग अंडर द सन इज फाइन विद अस. क्या लग रहा है मतलब? देखो, ओके, अच्छा, मैं कुछ एक चीजें जो हमने लास्ट 3-4 महीने में पढ़ी, आई विल लाइक टू शेयर इफ टाइम अलाउज. You tell me whenever other people are wanting to speak something, they can raise their hand and I'll stop there. One thing which we did in the month of December and January, अपने 12-13 साल का डेटा लिया था हमने to see how Nifty mid cap, Nifty large cap and Nifty small cap has performed. And we found only 4 instances where small cap has delivered 35% or more return in a particular calendar year. And what we found is in the subsequent, जिस साल 35% आया था स्मॉल कैप में, उसके बाद वाले 4 साल का एवरेज लिया तो -8% था. कैलेंडर ईयर 2023 का स्मॉल कैप का रिटर्न 47 या 48% था. ये दिस इज द basis, this is the starting line of the so and I know small cap was cheaper. के हम लोग 12 साल का अगर एवरेज लेते हैं तो निफ्टी का प्राइस टू बुक अबाउट 3.4 था, और जो स्मॉल कैप है उसका प्राइस टू बुक अबाउट 2.9 या 3 था. सो अबाउट 15% डिस्काउंट इट यूज टू ट्रेड. कैलेंडर 23 के क्लोज में small cap was trading 15% premium to their historical 10-12 years average. So this is the background and the euphoria which has been created in the small cap universe. मैं ना consistently, दो अपने spaces में काफी टाइम, but I used to share what I'm seeing on tweets and all. कुछ एक चीजें ना ऑफ लेट जनवरी में विच स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग वेरी स्टार्कली, कि एक कंपनी जिसका फ्री फ्लोट 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ है, उसका डेली का ट्रेडिंग वैल्यू इज गोइंग मोर देन इन्फोसिस, HDFC एंड रिलायंस. बॉस ऐसा हो ही नहीं सकता अनलेस यू हैव डीप डीप यूफोरिया के बॉस. ये सब तो चलते ही रहेंगे. दीज आर स्मॉल PSUs जहाँ पे फ्लोट ही नहीं है, उनका ट्रेडिंग वैल्यू, वैल्यू में बोल रहा हूँ, उनका ट्रेडिंग वैल्यू वाज ट्रेडिंग मोर देन HDFC एंड रिलायंस. मैंने कुछ एक बार कोट भी किया था कि आज ऐसा था ऐसा था. टॉप 10 जो आज भी जो टॉप 10 है उसमें 3-4 नाम PSU जो छोटे वाले फ्री फ्लोट वाले स्टॉक है. ऐसा होना नहीं चाहिए यार. लार्जर कंपनीज जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैप है, दे वुड बी अमंग द टॉप ट्रेडेड वैल्यू. वॉल्यूम में हो सकता है किसी का शेयर आइडिया का 15 रुपए का है तो वो बहुत करोड़ों में ट्रेड करता है, बट वैल्यू में नहीं होना चाहिए, विच वॉज स्टार्टेड हैपनिंग I guess from second or third week of January onwards. And then देखो, whatever everyone else is saying ना, is completely true. यूफोरिया ना पैराबोलिक मूव जो रहता है वो टुवर्ड्स द एंड एकदम पैराबोलिक आता है. प्रॉब्लम क्या है ना, देखो हर एक बुल मार्केट में कि और मार्केट पार्टिसिपेंट में, यू शुड ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एज अ सर्फर. कि मैं सर्फर हूं, मैं वेव क्रिएट नहीं करूंगा. वेव का अंडर करंट ऑलरेडी था and I'm riding that wave. The problem with the bull, people started believing that they can create the wave by और सबको एक ऑफ लेट क्या था
कि maximum of the people who have come in the market after 2020, they are more एक बैलेंस था. पहले क्या था कि बैलेंस ये था 15-20% investor and 75-80% trader who follow charts or technicals or numerical, but the balance got distorted post 2021 and severely distorted in 2023. Okay, everyone is talking only about momentum and trading. एक छोटी market cap companies where there is no news on a particular day, why delivery volume is only 10-12%? Because people are trading only for 1%, 2% gain and they make that money in 1 or 2 days and they exit. If everyone is following the same chart, same technicals, what will happen when the technical start to show downward trend? एक गेट तो निकलने का छोटा सा ही है, एक साथ सारे निकलेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो आज था कि आउट ऑफ निफ्टी 500 there were 26 stocks which traded 10% or lower, and out of those 26, 23 were the PSU's name. This is the euphoria which has been created in last 1.5 year. People are not seeing what valuation range or trade they used to do, be it price to earning, be it price to book. 10 years, 15 years average, if you ignore last 1.5 year, उससे यार 40-50% री-रेटिंग में हो सकता है. 4-5 times only on stories and narratives is very difficult. मैंने एक बार पहले भी एक ट्वीट डाला था कि people are so much gung-ho about railway stocks. But give me one reason. If you are bullish on railway, who will supply bearing to the railway companies? There are majorly three MNCs in India who do this. They are not doing anything in last 2-3 years. तो मतलब चले हैं बट ऐसा पैराबोलिक राइज नहीं है लास्ट एक साल में. सो द प्रॉब्लम इज अपने ना स्टोरी में खाली ऑर्डर बुक पे रिलाई करेंगे, then when it hits reality, everyone will be following charts and everyone will be trying to exit at the same time. Uh, will be difficult to say how the market will respond in next couple of days, but uh, if someone is still holding, I would say if you are standing on decent gain, advice is to book at least decent quantum of that gain right now. If you are holding the stocks which has not performed in any of the cycle prior to 2020 and only performed in last 1.5 year, 2 years, then you don't know when the correction actually start or what level this price can go down to. बाकी कोई सेक्टर पे बात करना तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं. रवि, बैंक्स पे ही जो कंसर्निंग लग रहा है कि जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ने के आसार हैं और प्लस द इजी मनी विच इज द कासा इज डिक्लाइनिंग फॉर बैंक्स, तो उस पे कोई थॉट्स? उस पे ना एक मेरे को याद है अपने विनीत या आदित्य शाह के साथ अपने डिस्कशन किए भी थे आज से 3-4 या 5 महीने पहले. एक एक टेंडेंसी जो इंडिया में वेरी मच विजिबल विच विच इज इरिवर्सिबल कि ना कासा लाना बहुत मुश्किल है अब आज के दिन अपने कंट्री में. से इफ एनीवन इज अ सैलरीड क्लास लाइक मी, what you are doing is either the day I get the salary, earlier I used to keep something in my saving account. Now people invest or do they pay EMI and meet their expenses largely from credit card, apart from what they petty cash which they keep in at home. So ये सा वाला जो टूटने का है ना, this is also correlated to increase in home loan penetration, increase in car loan penetration. कि आपको आज के दिन टेक्नोलॉजी वाइज स्वीप एफडी का मिलता है सिस्टम, तो आपको पैसा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है, सेविंग अकाउंट पर्टिकुलरली. प्रॉब्लम क्या है बैंकिंग सेक्टर को, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, is they are not getting that deposit growth to meet the advances growth. ये एक कंटेक्स्ट है लास्ट 3-4 क्वार्टर का, स्पेशली फॉर द लार्ज प्राइवेट बैंक एंड स्पेशली फॉर द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक. But on the contrary to that, think about this that 70, अगर अगर डिपॉजिट जो भी इंक्रीमेंटल आएगा कंट्री में वो कहाँ जाएगा? वो इन्हीं के पास जा सकता है. सो पीएसयू द लार्जर वन विल स्टिल होल्ड द स्वे बिकॉज उनका अभी भी क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो 75-80 है. बट इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट क्रिएट होगा कंट्री में वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा. Few of the banks have gone very aggressive in branch expansion. 70% of the branches added in India in last 1.5 years has been added by one particular bank. So
वो सब देखने के बाद ये लगता है, और ऊपर से देखो जो ग्रोथ है वो तो सेम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री 12-13% और 2-3% एक्स्ट्रा, उसी पे बैंकिंग सेक्टर ग्रो करना चाहिए, और उसमें अगर डेकेडल लो वैल्यूएशन में प्राइवेट बैंक्स मिल रहे हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी हार्मफुल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया। हाँ, लास्ट 2-2.5 साल से तो रिटर्न नहीं बने हैं लार्ज प्राइवेट बैंक में, एक्सेप्ट वन। Most are stagnant for last 3-4 years. But what has happened is the valuation has come down materially in last 3-4 years. कासा सा आना बहुत मुश्किल है कंट्री में, फॉर टू वे रीजन। वन इज आवर सेविंग रेट हैज गॉन डाउन ड्रामेटिकली, and that saving rate we have to see in conjunction with credit card and other kind of loan products which has been increasing penetration in country. अब मेरा जैसा कोई बंदा वो कार लोन ले लेगा तो वो पहला दिन अपने सैलरी आते ही सब्सटेंशियल पोर्शन स्वाइप करेगा कि मेरा ईएमआई चला जाए और ईएमआई से ज़्यादा पे हो जाए, and whatever expense I have monthly, I will try to meet it from my credit card. Similar for house, if anyone has a housing loan. And anyways, saving tendency among the youth is decreasing materially. So the similar kind of concern, while for a corporate account on the current account, where different branches and different zonal heads used to have a large current account, now they are having very small, because treasury is centralized among corporates. So that is impacting the current account as well. जो अपने को डेटा दिखता है उसमें तो बहुत सारा कलर्ड ये भी है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट अकाउंट में लास्ट 10 दिन में एफडी क्रिएट किया जाता है, सो दैट during the end of the quarter we see a materially good deposit figure. Otherwise, if I think we go and check what is the average daily deposit of a bank, then it will be even lower than what has been reported at the end of the quarter. But you have to stick with this. Okay, large private banks are still very attractive proposition, and large PSU banks, they are still very attractive in terms of valuation. I'm not saying about the smaller four where the free float is negligible, because वहाँ फंस गए तो हो सकता है बच्चे बड़े हो जाएं और दाम नहीं आएगा. But smaller PSU bank, you should be very cautious. But large PSU banks are very attractive. Right, Ravi. We'll come to you again as and when a situation require your inputs. So Amit is also there. Amit, any question or quick inputs from your end? Definitely, Prince. I just want to bring certain points maybe people might have observed. Today I was looking into the the LBMA vault. Look at the where the gold and silver are actually decreasing in the vault day by day. In fact, they publish on monthly basis. As you see, their vault. I'm talking physical gold and physical silver. I'm not talking the bond ETF or ETF. I'm not talking about gold ETF or silver ETF. I'm talking physical gold and silver. Okay, and that especially if you look at the silver, it has gone down 1.1%, and the trend is continuously happening where from the vault of the biggest gold and silver exchange is going down physically. So what does it has an impact? I know people like to invest in stocks and a lot of other instruments, but I feel gold price will go up drastically in nearby future. I what I am telling, I bet is it'll go five folds up. In the sense, as of today, if I'm looking at properly, what is the 1 ohms of price we have for the in Indian rupees? It's around 161K, 161K. So that is the price of a gold as of today, and the silver price is going up too. So I want to understand from the other experts here what they see and where the prices will move. Thank you. Thank you. So Deepak, by any chance you had a look at the charts of gold and silver? Anything on anything interesting developing, or maybe Ravindra, if you have any inputs? Yeah, Ravindra.
Look, one thing very simple about investment in the gold. I always repeat this thing. There is a golden rule about investment in gold. One who has the gold always rule. That's the golden rule. Uh, the timing of the gold investment has to be along with when Fed announces its first rate cut. I also agree that gold should be able to deliver phenomenal return from here for the reason that the world is still kind of distancing itself away from currency, which is fiat currency, and gold would be a proper answer in that scenario. Always worked very well during a inflationary and a war kind of situation, which has escalated in last 2 3 years. So a perfect scenario for entering into investment for gold. The only thing is gold doesn't work well when Federal Reserve are trying to increase rate or trying to get control over inflation. And minded that US is US has entered into election year this year. So for a politician, it is more important that they have control over inflation rather than having a buoyancy in economy. Their vote share moves dramatically because they haven't seen inflation for last 20 years. So when you see Federal Reserve coming maybe March or later towards June and announcing their first kind of rate cut, which tells that the whatever cycle you have seen on the interest rate is peaking, I think that would be an ideal entry point. Regarding silver and silver inventory, what I remember is all the metal exchanges, they somehow for last 4 5 years they have lower and lower number of days inventory left. In the prominent London exchange, but their inventory was increasing materially in the Shanghai one. I'm not sure if everyone is looking at the combined inventory level from three, four important exchanges, but normally the commodity investor used to look at London only. So their inventory level are coming down. That is a scenario for last 10 years. What we need to see is how much the zinc production and copper production, which from where you get a byproduct silver, is increasing, and is because silver also has a tremendous usage on the industrial side. So that also has to be seen. But gold, I am sure that if you plan it in a way, starting even now, and maybe the best time you will get when the Fed reserves start cutting rate, because then it makes a mark of the peak interest rate for the near term, and from that time I think gold should be doing phenomenally well. Yeah, Amit, you have your hand raised. Definitely, Prince. I want to know uh, the further more inputs. What I want to ask is from, I know everyone have observed from LBMA, Chinese banks exited. Okay. None of the people have given any news. Like Western media even opened up their mouth and they discussed about this. It's a big step. I'll tell you why. When this happened, in an instance where the statement came, Fed controls the gold price. Okay, let's take in the past who used to control the derivatives or the gold market? Chase, Santander, Citi, Bank of America. They have suppressed the gold price to an extent where to maintain the value of a gold, sorry, the dollar. It's a known fact. The gold price goes up, the dollar comes down. That is what exactly BRICS are doing, right? Without a single war, without throwing a single stone on the America, the collapse of a currency is by bringing up gold value up, and that's exactly what Indian RBI is doing. They have purchased silver, record level, they have purchased gold. And when, I'll give an instance where when Chinese bank pushed off themselves from the LBMA, they LBMA told we will stop derivatives in gold in dollars. And then they'll actually align with the Shanghai's market. You see, that time when this happened, in Shanghai market, the price of gold went $119 up, shooted up. And suddenly, US cannot control the value of a gold. And truly, what I believe still, the reason is where the people are actually, the central banks are actually accumulating at record level of gold and silver. That includes India, China at very, it's extensive because it mines
gold, and it actually even purchases gold. And in fact, this time the report came where Indians used to buy a lot of gold in India. That has been crossed by the people of Chinese people are buying more gold in China. There's so many facts. And where the BRICS coalition, what is happening, BRICS Plus, it's all over of strategy where they are buying tons of gold and silver to make sure to back their currency. And there is, you saw Tucker's and Putin's interview. Putin told it's not us who did this to the US dollar. They themselves created that cost where now they have more than 18%, less than 18%, their forex reserves or the treasury bills, what they hold is more than 18, less than 18% of USD. You see what China is doing, they are dumping treasury bills. In fact, RBI dumped treasury bills. Why? Because the moment they 84 rupees it went, our currency price per dollar, RBI had to sell treasury bills to bring back the currency of Indian rupees back to the stability. Because we unfortunately in India, we tend to forget that the manipulation of USD has gone to the extent where they've utilized in terms of sanctions and everything. I think the day when these scales already, which you see, which is pushing away from USD, as of today, more than 20 plus percent, I would call 32 plus percent of the global trade, which is happening not with USD. So, 58 plus countries, India is trading with rupees. Chinese yuan, everybody are accepting. We might tell nobody likes China, but the fact is around talks straight, they are accepting Chinese yuan. That includes for purchasing oil and gas, LNG. Correct? So, my only point is this will continue. The gold price is not controlled by US anymore because the China is minting more and China is mining more and they're purchasing more, in fact. So they don't have any idea how much they are mining, how much they are holding. That is where they are struggling to control the price. And they're playing with it. They're playing with gold price actually. So that is what I tell. Fed has no control. And that's where the whole point, the BRICS will move towards gold and silver backed. And that I strongly believe, including Indian rupees, that is, which is CBDC, central bank digital currency, which is already in play, which is coming. In fact, I can tell you, my company where I work, the person, regional bank, I'm talking in Karnataka, a regional bank SMS that he will be moved into CBDC, a digital rupee. Okay. And I strongly believe that will be gold backed because if India has to grow, they cannot peg the rupee with dollar, which has no value. In fact, if you look the domestic purchasing power, I still tell this one actually. It's a fact. I'm not making it up. No, I'm not making up actually. A $1 currency, a domestic purchasing power is 2 cents. You have the gold will rise, the gold rise and the gold adoption in the CBDC countries of the currency they're getting pegged. You see the dollar will die soon, and this Fed knows that actually. Fed knows very well. Jerome Powell knows very well what is happening. You see Putin's confidence. You see, the countries who are moving away out of. I'm waiting Mexico to move out of dollar currency. I mean, trade with US because Mexico is largest trading partner with US. If that happens, that is a debacle for the US and more to come. And you see, this is not a something which I'm telling will happen, might happen. No, it's already happening. It's already in place. So I know one thing for sure. You look at what happened. One of the biggest, what is happening in US currently in for New York Commercial Bank. It is just the start. Previously, we saw a lot of banks collapsed in the bank in US. Now more banks will collapse in US. In fact, recently Jerome Powell agreed, accepted that the regional banks will collapse and they will have the same issue because
you get into the commercial real estate debt. They more than $500 million, more than half a trillion. Sorry, more than half a trillion. That's 500 billion of debt they have. They have defaulted on that value, and that's a recent stats. This is a critical. Now the banks will manipulate the market to the extent where they will create a FOMO. And 2008 is nothing. The collapse what we seen in 2008, this will be bigger than the what we saw in 2008. So get ready, be prepared, hold gold and silver. I'm not here to give any financial advice, but this is what exactly I understand what is happening, and this is definitely will happen. Thank you. Thanks, Amit. So, Ravi, anything on any? I mean, you agree to his views or any counter attack? Everything is so unpredictable right now, right? Because if you go to 2023, everybody here said that 2023 will be the most disastrous year. And because of the AI, we saw a complete change. But definitely, a lot of people analyzing the market here in the US are saying that by June, you're expecting a very big market correction. But that does not translate to many other factors, right? I think we have some very big, changes coming in the world. I think the elections in India are going to be very, very significant, not only just for the Indian market. It will definitely have repercussions to the global market. Unfortunately, the US is dealing with a political situation which is extremely, extremely volatile. If you have to look at the word volatile to its biggest definition, there's no clear uh, predictability that who will really come in, right? You have dealing with two very old president candidates. You don't have a very strong VP. The VP announcement on the other side is not clear. You're dealing with legal issues. So I would really say that the market in India is very, very different from the US market. India's going on a very strong bullish, and we see that. Of course, there will be market correction, but I don't see that will be of the same nature as what the US will go through. US will probably go through a severe thing. So I think the trajectory is very different, and this we really see. Like if you go back to the 1980s, and if you look at that very famous chart, right, the way China started to go up, and it didn't really matter what happened to the early 1980s crisis. If you go back to the Reagan era, right, there was another very big crisis before the 2008 crisis. That didn't really impact China in a very big way. In fact, what it did was it actually boomed China to the next level. So I think there is, of course, a kind of a correlation to the Indian market, but the Indian market is kind of maturing into its own independent space, which is going to be very different from the China and the US market. So yes, there is a market correction. There will be a degree of it, but the degree will really be different in Indian market and in the US market. US is going to go through some crazy time. Thanks, Ravi. So we have Hardesh ji with us. He's from Canada, and last time when we heard, he made very pertinent points. So Hardesh ji, over to you. Well, thank you, Prince. Thank you, Vajpayee. And thanks to the speakers. Yeah. No, it's good space, Prince. In fact, I have been most of the time listening just sitting in the bottom. I'm very old guy, as I said, Prince. I started my career in stock market 87, 88 with the Reliance IPO. So volatility, I have seen so many, like Harshad Mehta, I've seen 92.com US because I moved in 99 into US, then Canada. So mostly I'm playing in three markets, and I have substantial portfolio both in Canada, US, as well as India. And I'm more positive towards India than I would say the Canada and US. And my portfolio is really going much better shape and much more return as compared to Canada, of course. US I can't say because US is really doing well. But जो एक चीज मुझे bother करती है, the things change because I left India 99, but I'm still in touch with the stock market on daily basis. जो options और ये जो futures, the people, the young generation especially, जो इसमें घुसे हैं, मतलब especially after COVID,
That's the dangerous trend I've seen in this market, especially India. No doubt कि डीमैट कस्टमर बड़े हैं, डीमैट यूजर बड़े हैं, बट जो क्विक मनी बनाने वाला काम जो है ना, that is a dangerous trend. I have seen it. I mean, I have been doing option. I mean, no doubt I'm not defining it mostly in US side because I can control it in daytime. मैं covered call जो भी मारता हूँ, but I have portfolio. I do option for not me. I mean, majority of the big hedge fund or the institutional, they do option to protect their portfolio for the downside. वो पैसा बनाने के लिए नहीं है कि जाके सीधा आउटराइट में नेकेड ऑप्शन लिया लेके मैं पैसा बनाना है. वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो, एक हमने सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो बना के, देन टू प्रोटेक्ट इट, देन वी बाय हेजिंग टू दैट पोर्टफोलियो ऑप्शन फ्यूचर करते हैं. बट जो इंडिया में जो ऑप्शन फ्यूचर है, इट्स प्योरली मेकिंग फॉर द क्विक मनी काइंड ऑफ थिंग. जो हालांकि आई मीन सेबी इज टेकिंग गुड डायरेक्शन ऑन दैट के वार्निंग देते हैं, but still people are doing it, and especially I mean leveraging or margin pay, which is dangerous. I think so many people told about that कि margin पे खेलना और ये leverage करना, that's the difficult part of that. I mean, I have my friends in hedge fund in Mumbai, and they keep telling me last 1.5 year ke focus on mid cap, small cap, they are way to go for 1 year. But I was more conservative. I mean, even Hardeshi, I guess we lost you, unable to hear you. Yeah, Hardesh, we cannot hear you for some reason. am I audible? Yes, right now you are. We Oh, lost okay. for last 20 seconds. Oh, okay. No, so that's what I would suggest. I mean, especially in Indian market, if people work on cash and delivery, make much bigger money than option and futures or trending kind of thing. मतलब वाजपेयी से काफी मेरी बात होती रहती है, and that he is doing a great job. But I think the young generation which they are doing on this, I mean, उनके लिए जो volatility, especially जो कोविड के बाद आए होंगे अभी, उनके लिए एक नई चीज है कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, जिन्होंने पास्ट में देखा नहीं या कोविड से पहले जो हुआ. तो दैट्स अ डेंजरस ट्रेंड, बट थिंग्स विल चेंज. इट्स हार्ड वे. मतलब दे विल नॉट लर्न इजी. इट्स डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट. But I mean, macroeconomics, what Raviji and others talking about, is beyond our control, right? I mean, as investors, I mean, we cannot control all this macroeconomics or macro political situation. All we have to do is see, as an investor, मेरा focus हमेशा मेरे portfolio पे है, how to manage my portfolio. जो होना है, which is beyond my control, I'm not bother it. I'm not concerned about that. Concerned in the sense कि मुझे सिर्फ अपने portfolio पे focus रखना है, उसको मुझे profitability बनानी है, rather than कि I can रूस में क्या हो रहा, यूक्रेन में क्या हो रहा, गोल्ड हो रहा, जो होना वो होना है. You can't control it. Just manage your own portfolio. वो ज्यादा फोकस है बजाय मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ. दैट्स माय पॉइंट जी ऑफ सर, व्यू. बिल्कुल. थैंक यू सर. बस थोड़ा दुआ और पार्टी में याद रखा करो सर, बाकी तो आप अच्छा बोल रहे हो. नहीं पार्टी बड़ा वार्टी लाइक करते रहते. आप कभी न्यूयॉर्क आओ सर. न्यूयॉर्क सर वो फिर वो आपको सर या महंगा ज्यादा पड़ जाएगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा. तो आप कभी अरे इंडिया कोई आएंगे तो सब पार्टी करते हैं. जरूर आप इंडिया भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू सर. Okay. I think there was one more speaker who got dropped. So broadly, more or less, we had a holistic discussion. So one last call, if anybody has any questions, or maybe the existing speakers have any further points to make, then happy to have them again. I also see Ameya, if he is free, he can also chip in. Rest, we can, if there is nothing more to discuss or add, then we can drop off for the day, and definitely will come again. And guys, if you have a look at the participation, so if you haven't seen the market in the daytime, the participation in the spaces can tell you the temperature of the market.
So, Ameya, is there any issue? I saw your request. Hi, Ameya, how are you? All good, man. So, क्या चल रहा है, Ameya? Any thoughts around current topic or maybe anything else you have to your mind? I was just listening to all the speakers talking about काफी सारे economics की theories वगैरह बारे. To be very honest यार, I'm not bearish. एक दो दिन के फॉल में एकदम सडनली इतना स्टांस चेंज करना is not logical. I know there are cracks at many places. गोल्ड की बात हुई ये हुई, but I don't think next couple of years आपको इक्विटी में इतना ज्यादा कुछ इशू होने वाला है यार, to be very honest. बहुत सारी वॉलेटिलिटी हमने पहले भी देखी हुई है. इनफैक्ट बहुत सारे स्पेसेस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अमेजिंग स्पेंड्स हो रहा है. कंपनीज आर नॉट एबल टू स्पेंड इनफ टाइम एग्जीक्यूटिंग दोस प्रोजेक्ट्स. काफी सारे ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे यू कैन still find lot of opportunities. I'm not at all bearish here, to be very honest. In fact, I'm happy that this fall came in. Of course, I don't understand PSU on all those sectors, so मैं उसमें कुछ invest नहीं कर रहा हूँ. But in general, there are still lots of sectors, lots of spaces. जो काफी सारे frontline trends की proxies हैं, काफी काफी अच्छा opportunities हैं वहाँ पे. So I'm just making on list to what to buy in next couple of days यार. So मोटा मोटी यही है. Great, yeah. Although, like you had discussed what you were looking at previously when we had an interaction, but again, anything more interesting I mean, in your watch list or you want to talk about, or nothing of that sort as of Yes, now? sir. Not yet as of now. I'm still. अभी तो सिर्फ लिस्ट ही बना रहा हूँ मैं. But we will discuss specific names whenever we have any other further opportunity. As of now, तो नहीं. Great, thanks. So, Ravi, Vajpayee ji, Ameya, Vineet, Hardesh, and Ravindra Bhandari got dropped. So, everyone who joined, Vineet, anything on your part? No, nothing specific. I think I agree with Amaya largely. This is what I was saying in the beginning as well, that, while uh, there will be short-term blips, and I think, the point that one of the participants made around the long-term potential of a crash in the US market, there's always that potential. I just don't think it's going to happen anytime soon. It's one of those things that you can't predict. It's a tail risk. You can position for it to a certain extent, but there's no point worrying about things that are, out of your control. And uh, macros, look, it's difficult. We can make our best guess, but it's very difficult to try and call out any broad-based macro challenges. I think our best bet is to focus on uh, the markets that we're tracking in India, and if possible, maybe position as much as you can towards domestic facing themes, sectors where spends are happening, where there is clear availability of money. So if you follow the funds, follow the liquidity, I think you should be fine. And use the dips the best you can to try and add to your most preferred and highest conviction positions. A lot of us, and I, for example, have missed out making decent sized positions in some of the themes, where there is a good amount of spending and tailwind. So I will try and use uh, this time. Hopefully, there will be corrections. There will be corrections along the way, obviously, and this one as well could last longer than we know. So yeah, just use this time as best as you can and focus on companies that are delivering. Anything that's just a narrative and is not delivering on numbers, I think that's where the risk will come from. But any company that's doing well on numbers is walking the talk in a sense. Will in fact not only be okay in the fall, but might actually significantly outperform a lot of its peers. Great, Vineet. And buying the dip is a wise strategy, but we have to ensure that we shouldn't keep buying the dip until the bank or the company goes bankrupt, or either we go bankrupt on that part. So, so broadly, see, the issue, especially I'm also like facing this issue and to some extent, and most of the majority of the retailers who has spent lesser time in the market.
So the problem of plenty is like too many ideas. So your focus gets divided, and rather than focusing on few of the areas which you understand well, we keep on looking for new names and new themes and whatnot, and on the basis of that we divert our, yeah. No, that's true. These behavioral lessons, I think you can only learn with time in the market. It's almost like that same age old thing, right? That everybody has to pay some market fees, and it can only come over a period of time. It's fine. And Everybody goes through the Vineet, cycle. विनीत मार्केट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार. आप मतलब एक शेयर खरीद के 10 शेयर खरीद के मतलब सारा पूरी दुनिया की टेंशन आप लेने लग जाते हो, तो व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस देन. बिल्कुल. So thanks man. So thank you everyone for taking out time. It was a session which was planned because I know people had so many apprehensions to their mind. So we got a diverse set of speakers, our guests who had their point of view, and definitely everybody adds value in one way or the other, and definitely our audience get benefited. So surely a great session, and I look forward to many more sessions as and when time demands. So those who joined as speakers and added value, thank you so much. And for the audience as well, before they have been keeping with us so long because of their interest in the market. Thank you so much. And if you are yet to subscribe to the channel, yeah, please do that. It takes a lot of effort, and you guys can help with that. Thank you so much. Good night. Take care.